Hello, everyone. I am Dr. Parul Chopra Button, Senior Consultant Obstetrician and Gynecologist at Cloud9 Hospital, Sector 14, Gurgaon. And we are coming to you live on Credi Health. The topic for today is going to be pregnancy well-being in the pandemic. We've received quite a few questions from you in advance. Thank you for that. And I hope to answer as many questions as I can. So please keep putting them in the comments below. So pandemic, it's a term almost everybody knows these days, the media, and we've all been in the midst of one since March 2020. Um, the whole of the year nearly has gone in tackling it, in adjusting to it, and in adapting to it. A special population at this time, and the one that I particularly cater to, is the pregnant women. Babies who've been conceived in the pandemic, babies who were conceived before and are delivering now in the pandemic. This is a especially vulnerable time, emotionally more so, but also physically for women. And therefore, this is something that's come up repeatedly in our consultations. Almost every single pregnant woman or couple that I have met during this time has had a special concern with regards to COVID-19 and their baby and their own safety and well-being. So one of the questions that I've received beforehand, and I'll start straight away with that, is how to be safe in the office, which cannot be avoided at any cost. Now, while initially the response was complete lockdown, offices were closed, we were all working from home. When I say we, it is the other members of our community, as doctors, as nursing staff. My hospital and my community particularly was still working the same way as before, of course, with quite a few changes and adjustments to our routines. But offices which can go virtual, they were nearly completely virtual. And now a lot of pregnant couples come and tell us that the offices are reopening and they have been advised to join back the office. What can be done for a pregnant woman, particularly, who cannot avoid the office at this time and needs to go? Now, there are a few things, and this would be one, advice, and two, also an appeal to the HR managers and to the people who are running these offices. Everybody's health and well-being should be the topmost priority. It is only in the best interest of the workers in the office as well as the corporate or the managers. The productivity is higher, the employee satisfaction levels are higher. So the health and well-being of the staff and of the employees has to be paramount in all situations. And there is no choice to be made between productivity and their health. Productivity and their health actually go hand in hand. Unless your employees are healthy, they cannot be productive. So this is where we all meet. Two, three things. If possible, ensure partial attendance in the office. So in some of the offices, what they've done is they've segregated the staff into maybe 3 or 4 parts. Each part comes, let's say somebody's coming on Monday and Tuesday, then somebody else is coming Wednesday, Thursday, the other part of the staff is coming on Friday and maybe Saturday, wherever Saturday is working. So ensure partial attendance. Maybe a few people from each department can come in and the others can stay home and work virtually. Whatever meetings, whatever work can be done without a face-to-face interaction should be done without a face-to-face interaction. We have technology at the tips of our fingers. I am coming to you again through a technology, through a forum. Use that as much as you can. As doctors, we have adapted quite a bit and are employing technology hugely in our work now. Maybe alternate days, alternate shifts. The standard precautions of COVID-19 are even more important if you're sharing an office space. So social distancing, and this is especially important at meal times because while you can wear a mask, otherwise, when you're eating, drinking, that is when you will certainly not be wearing the mask. Your mask would be down. So ensure that employees have their lunch in their own cubicles or in their own rooms and do not come together to a cafeteria or to a common area to eat together. Make sure the meal times are also the times when hand washing needs to be emphasized. Have reminders for yourself. Frequently wash your hands with soap and water. If you do not have access to soap and water, then yes, sanitizers can also be used. But before eating food, you must certainly wash your hands properly for 30 seconds with soap and water. There are hand sanitizing protocols. There are excellent animated videos that I see now. Earlier, we used to only do this before our surgical scrubbing. But proper hand washing, where you're washing the palms, you're washing the backs of the hands, you're washing in between fingers,
You're washing the nails, you're washing the thumbs, you're washing the whole hand, you're washing the wrists. In surgical scrubbing, we actually go down right up to our elbows, but you can just do it till the wrists. Wash your hands properly for 30 seconds. You may make a proper lather and then rinse. After you rinse, use a clean tissue to switch off the faucet of the tap, and then you may proceed to eat your food. So besides these, I think the travel to the office is also one of the concerns, particularly for pregnant women. If you have any risk factors in pregnancy, God forbid if there's been any bleeding in pregnancy, or you have uncontrolled hypertension in pregnancy, you're very close to your full term, maybe discuss with your doctor and individually take a call. How much is it advisable for you to go to the office? If possible, and if applicable, maybe maternity leave could be taken at this time. So, keeping the health and well-being of the employees as at priority, and amongst the employees of the pregnant women more so. A pregnancy, while it's a single woman who harbors the pregnancy, I believe as a society, as a community, it is upon us all to make sure that this special part of our population who's bringing in a new baby into the world needs special care and is particularly taken care of. So I'll move on to the next question, which says, what are the eating habits for immunity as well as nutrition? Now, these eating habits, most of the points that I'm going to enumerate for you today are going to be very common sense points. However, they warrant a repetition because sometimes common sense is what is practiced most uncommonly. The most important part of maintaining good nutrition and maintaining good immunity is to eat frequently. So make sure that there is no long gap of maybe 4 hours or 6 hours between your meals. If you ensure 3 proper meals and 3 snacks in between, you will be eating roughly every 2.5 hours, which is what we strongly recommend. Very, very important to have variety in your diet. Okay. I'm trying to see if there are some comments here. I'm having a little trouble. Okay. Yes. So the variety in diet is extremely important. Variety includes variety in the color of what you're eating, variety in the textures of what you're eating, variety in the food groups that you're eating. For example, if you're eating grains, make sure that you're eating variety of grains. You're eating rice, you're eating wheat, you're eating ragi, bajra, you're eating makai, corn, which is quite in season right now, especially in North India. Variety of grains, colors. When you eat fruits, variety of colors in your fruits. So whatever fruits are in season, again in North India, the fruits that I see in season right now are the papaya, apples, bananas, guavas, pears are coming in, oranges, maltas, kinos, so the whole citrus family. Now, in pregnancy, papayas and pineapples are something that we recommend that you have less. In fact, avoid pineapples and raw papayas if possible. Ripe papaya, a little quantity may be fine in pregnancy, but largely these 2 fruits we ask you to avoid. So the others, the apples, bananas, pears, the maltas, kinos, guavas, make sure you can have them. Take at least 2 or 3 servings of fruits each day. A fresh fruit is nature's fast food. It is what's going to keep your hunger cravings at bay. It's going to give you a variety of multivitamins, multiminerals, will keep you fresh, will keep your mind working much faster, and is excellent for your immunity. Again, seasonal diet is extremely important. We are in the winters in North India, and at this time, nuts are quite in season. So make sure you have all your variety of nuts. Again, almonds, cashews, munakka or kishmish is excellent at this time. Khumani is a wonderful source of essential nutrients. So walnuts are extremely wonderful. 2 things that I would recommend. The more locally grown these nuts are, the better they are for you. So source them from your local dealers if possible. And if you know where they are grown in, that's even better. The closer to your region they are grown in, the better they are for you. And nuts should be taken in moderation. Har nut ka, every nut has a particular quantity that we can have. So if you're having kishmish and cashews, maybe about 5-10 or so. And if you're having peanuts, maybe about 100 grams of peanuts would be fine. So keep moderation in your mind, and make sure that you're eating a small quantity of these nuts, again, as a snack, maybe in between your meals.
Ghee and essential fats are very, very important part of your diet. Make sure you have a variety of oils that you use in your cooking. Sometimes there is a notion that olive oil is an excellent, so now you're going to cook everything in olive oil, which is not a very wise way of improving your immunity through your diet. So make sure some recipes you're cooking in coconut oil, some of them in olive oil, some of them in mustard oil, some of them in ghee. And traditionally, there are certain recipes. For example, dal mein tadka is given with ghee. For example, South Indian dishes like sambar and etc. The tadka is likely to be in coconut oil. That will enhance the flavor, and that is the correct way in which you should consume these oils as well. Tea and coffee should be kept to a minimum. Somehow, in today's day and age, we're compromising a lot on our sleep. We'd like to be awake and continue working long hours even into the night. The consumption of tea and coffee, therefore, has gone up. And that is something that is quite bad for your immunity, because the more tea and coffee you consume, one, it has a diuretic effect, it causes dehydration in the body, it doesn't attribute to the fluid intake. Secondly, with tea and coffee, your sleep is going to be disturbed. And if your sleep is disturbed and you're not sleeping adequately, it is the number one reason that reduces the immunity, causes your waistline to bulge, causes extra fat deposition, puts your body in a pro inflammatory or a stressed out state. So, ensuring a good sleep, which means fresh foods, avoiding tea, coffee, regular meals, and a disciplined lifestyle of sleeping at the same time, waking up at the same time, roughly every single day. Health, immunity, these are very holistic, topics and fields. There's no one thing that you can do and ignore everything else. Certainly, before I forget, avoid smoking, avoid alcohol, do not consume any recreational drugs. All of these are an extremely important part to maintain your immunity and to keep you in the best of health. So there is another question that I can see that's come up. How to get your routine checkup done in pregnancy safely without getting exposed to the pandemic. This has been something that has been the top of the mind for doctors, managers in the hospital administrations, perhaps even before the pandemic was announced and even before March. So I think January, February is when in the hospitals, in fact, since the pandemic, we were sensing that a pandemic is on its way. We started preparing for this scenario as well. Uh, Wuhan is where China is where the maximum cases were. I remember the first meeting that we had in one of the hospitals I was working in at that time. There was not even a single case reported in India. However, our CMEs, our meetings, our workshops had already begun talking about if the virus were to travel to India, how would we organize ourselves and how would we start preparing ourselves to handle this pandemic, especially in our country where the population is so high, where the population density is so high, where health resources are not very equitably distributed through the population. So, two or three things. Number one, especially for pregnancy, virtual consultations or online video teleconsultations are a very important part of our care now. Almost all the hospitals, and certainly we at Cloud9 as well, we have developed the online consultation platform so that you can consult us from the safety and comfort of your home. It keeps us protected, it keeps you protected, it avoids unnecessary hospital visits, keeps the numbers in our OPD low. At the same time, discuss with your doctor to individualize which visits can happen safely virtually and which are the ones for which you should come to the hospital and we need to examine you. The one thing that I'd like to specify here is for emergencies, especially in pregnancy. Unscheduled bleeding, every bleeding in pregnancy is unscheduled. If you're pregnant, you should not be bleeding. Bleeding, spotting, abnormal, out of the ordinary vaginal discharge, pain abdomen, decreased fetal movements, severe headaches, vision disturbances, sudden swelling. This and anything else that you perceive is an emergency, please do not hesitate to come to the hospital. The online teleconsultations are not the right platform for emergencies. We need to examine you, we need to see you in emergency. When I say we, it's somebody from our team. We have 24/7 people manning the emergency units throughout the pandemic. Emergency is something where a doctor needs to evaluate you, and then we make the call whether we can send you back home or whether you need some intervention or admission, and we take it on from there. So don't hesitate to come to the hospital should the need arise. However, for the routine consultations, yes, online teleconsultations are an excellent platform. A lot of information we can gather from seeing you, from talking to you, from the history that we take from you, and from the past experience that we've had examining you before.
So that is one. The second thing is when you do come to the hospital for a routine OPD visit, one, we have tried to minimize the hospital slots. So earlier the slots were like we could give slots one after the other. Now we have distanced them apart so that we do not have too many patients in the waiting area. If you do reach the hospital early and there is a certain waiting, we are encouraging you to stay in your car so that you enter the hospital for the minimum possible time, reducing exposure to yourself and reducing exposure to the other people from you. No entry in the hospital without a mask. Sanitizers have been installed at all places. We encourage you to sanitize your hands. We have regular announcements reminding everyone as well, both the staff and the visitors in the hospital. So wash your hands with soap and water, use sanitizers where needed, maintain social distancing, wear your masks. If you have anything particularly suggestive of an infection with COVID-19, for example, fever, khansi, zukam, cold cough, body ache, sense of smell is lost or has reduced, टेस्ट अगर आपको नहीं आ रहा है, खाने की चीज़ों में स्वाद उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा है, so there are a few signs and symptoms, ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनसे कि it is a possibility कि COVID-19 हो सकता है आपको. In that case, ensure that you talk to your doctor beforehand. Inform the hospital administration. They will arrange a virtual consultation with the doctor. And if need be, we will be wearing a full PPE and we'll be recommending कि आप भी एक शील्ड पहनिए, मास्क पहनिए. हॉस्पिटल में आपका टाइम सबसे कम समय के लिए रखा जाएगा and we will be taking care. In case COVID-19 है आपको pregnancy में or even outside of pregnancy, one thing that is important is a lot of people in India COVID-19 के साथ we are able to manage with home care. So हर मरीज जिसको COVID-19 का इन्फेक्शन है हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे हैं. Pregnant women are usually younger, healthier, fitter, and they do not have a particularly higher risk of complications. ऐसा नहीं है कि because आप pregnant हैं तो आपका risk of complications ज़्यादा है. So a lot of pregnant women, even with infection with COVID-19, हम घर पे manage कर पा रहे हैं. However, अगर कुछ complications आते हैं बेबी में या मदर में, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बुखार नीचे नहीं जा रहा है, बच्चे का घूमना नहीं पता चल रहा है, पेन शुरू हो गया है या कुछ भी ऐसी तकलीफ है, please come to the hospital. We'll admit you in the hospital. In our hospital, in Cloud9 Sector 14, we have a whole floor which is dedicated to people either suspected with COVID-19 or diagnosed positive. As doctors, we will still look after you. Our whole team is committed to looking after you, even if you get diagnosed with COVID-19. However, to ensure safety from the other patients and the attendants and the other visitors in the hospital, एक फ्लोर को अलग से सेग्रीगेट कर दिया गया है जहां पे रूम सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए या सस्पेक्टेड कोविड-19 जिन लोगों का टेस्टिंग नहीं हुआ है उनके लिए हमने रखा है. इसके अलावा आई थिंक जितना ज़्यादा आप घर पे रहें इस टाइम पे उतना ज़्यादा अच्छा है. दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम फॉर यू टू बॉन्ड विद योर बेबी. जिन मदर्स ने रिसेंटली गिवन बर्थ, आपका छोटा बच्चा है, इस तरह का टाइम शायद बहुत लंबे समय तक दोबारा नहीं आएगा. सो घर पे रहिए, घर पे बच्चे से, घर पे अपने परिवार वालों के साथ जितना ज़्यादा हो सके बॉन्ड करिए इस टाइम पे. Very soon, hopefully, we will be out of this pandemic and life will begin in a very different way. दोबारा बाहर आना जाना, सबसे मिलना जुलना फिर से शुरू हो जाएगा. तब तक make sure you're connected with your family. आपका emotional health और mental health इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So Zoom calls. In my own family, in fact, a lot of my cousins and my extended family, they've gone overseas. So कोई अमेरिका में रह रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं, कोई बॉम्बे में है, कोई दिल्ली में है, कोई पटना में है, दूर दूर सब लोग रह रहे हैं. And a very beautiful thing that has come up is we've started having family Zoom meetings. So please do that. That is seeing your loved ones even across the screen, enjoying long talks with them. It is a wonderful method and बहुत सारे platforms आ गए हैं. Google Meets है, शायद Microsoft Teams है. I'm not very well versed in the different platforms, but there are many platforms, video calling, Skype, etc., जिनके through आप in touch रह सकते हैं. You can have celebrations. Some of the important milestones in our family we've celebrated through this, and I strongly encourage everyone to do that. We have a question from Sneh Jha Nigam. She says, hi, could you please share some insight into diet for better fertility? Okay, so Sneh, very important. Fertility, pregnancy, parenthood. ये ऐसा हमें लगता है 3 अलग-अलग पार्ट्स ऑफ लाइफ हैं कि पहले आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, फिर आपका प्रेगनेंसी का टाइम है और उसके बाद आपका पेरेंटहुड शुरू होता है डिलीवरी के बाद.
बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है एडवाइस, द सेम कॉमन सेंस जिसकी मैंने पहले बात की थी वो कंटिन्यूअसली होता है. A person who is not healthy during fertility wala phase, during trying to conceive, is likely not very healthy during pregnancy and is likely not going to continue to be very healthy as a parent. And as a parent, आपके habits, आपका lifestyle, आपके बच्चे पे बहुत असर डालते हैं. अगर आप healthy हैं, active हैं, अच्छा खाना खाते हैं, regularly खाना खाते हैं, आपके बच्चे भी बचपन से ही वो आदतें सीखते हैं. One of the common things that we realize as parents and as someone who looks after a lot of parents is children do not do what you say, children do what you do. So these little ones very silently और बहुत छोटी उम्र से एब्जॉर्ब करने लगते हैं कि मम्मी क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं. अगर आप हरी सब्जियां खा रहे हैं बच्चों को भी पसंद आएंगी. अगर आप सैलड्स खा रहे हैं, अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, तो बच्चे भी ये सब चीज़ें नेचुरली खाने लगते हैं और उनका भी हेल्थ और वेलबींग इम्प्रूव हो जाता है. So the same things fertility के लिए, eat as much fresh food as possible, eat home cooked food as far as possible, eat food that has been that is not coming out of a packet, that is not imported from somewhere, food which is very locally grown, food which is culturally जो आपके लिए appropriate है. हमारे इंडिया में स्पेशली हर जगह का खाना इतना फर्क और इतना टेस्टी और इतना होलसम है कि अगर आप साउथ इंडियन डाइट देखेंगे तो उसमें इडली, सांभर, डोसा, चटनीज, बहुत कंप्लीट डाइट है. पंजाबी डाइट देखेंगे तो उसमें पनीर एंड पराठे और उनके प्रेपरेशंस और उनकी चटनियाँ, उनके अचार, बहुत कंप्लीट डाइट है. बिहार का डाइट अगर आप देखें या कश्मीरी डाइट देखें, कश्मीरी क्विजीन, इट्स entirely different and very very wholesome in itself. So very very important when you're trying to get pregnant to have a wholesome diet of the culture that you belong to and locally grown fruits, multiple grains. थोड़ा सा कम खाएं. आजकल ज़्यादातर प्रॉब्लम ये है कि वी आर ऑल ईटिंग टू मच. ओबेसिटी इज ऑन द राइज. हमारे बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है. हम उतना फिजिकल एक्सर्शन और उतना मेहनत नहीं करते हैं जितना हमारे पहले वाली जनरेशन्स करते थे. वी आर नॉट वर्किंग ऑन द फार्म्स, वी आर नॉट वर्किंग विद एनिमल्स, वी आर नॉट वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज, स्पेशली अगर आप अर्बन सेटअप में रह रहे हैं. सो वेरी वेरी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है. काम करने का मतलब है एक लैपटॉप के सामने बैठ जाएं और पूरा दिन बैठे रहें. 8 घंटे 10 घंटे का सिटिंग हो रहा है. यू मस्ट हैव हर्ड दिस, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उठ के चलें फिरें. डाइट अकेले नहीं, पर डाइट के साथ आपका एक्टिविटी, आपका स्ट्रेस, आपके इमोशनल वेलबींग, आपके रिलेशनशिप्स, आपके स्ट्रेस लेवल्स, एवरीथिंग contributes to fertility. So the healthier you get, the more disciplined your lifestyle is, not only in terms of diet but in terms of the other parts of life as well. ये सभी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी. One thing about fertility is I've noted particularly important to give this advice for women, also for men, but make sure you certainly, I hope you're not already smoking or consuming alcohol, but if you are and you're trying to get pregnant, very, very important to stop smoking, stop alcohol completely. This is an extremely important time for you. Fertility rates go down with smoking. Passive smoking is just as dangerous. And as you get pregnant, there could be a lot of birth defects in the baby and a lot of complications if you're smoking or consuming alcohol. So avoid that. And if you are trying to get pregnant, all my best wishes. If you're over 30 years of age, or if you have been trying for about 6 months to a year's time, and you feel that you're not getting pregnant, maybe it would be wise to book a consultation with your gynecologist for two reasons. Number one is a pre-pregnancy checkup or a preconception visit that I strongly advise to optimize your pregnancy outcomes. And number two, if there is a delay in conception, we would want to just assess do some basic tests and find out if we need to help you earlier rather than later. So for an individualized, what is the right test for you? What is the right supplement that you should be taking? Make sure you book a consult with a gynecologist soon. I have another question here from Palak Jain, and she says, is there any kind of lasting impact or side effect on the baby or the mother if the mother is COVID positive? So Palak, yes, if the mother is COVID positive, it does have certain risks at several times in pregnancy. The risk of miscarriage, there have been some case reports, but largely in early pregnancy, it does not seem to increase the risk of miscarriage or birth defect per se.
Middle part of pregnancy, what we've noticed and what certain other literature case reports are also saying, some bit of oligoamnios, which means the baby's the water level, जो बच्चे के आसपास का पानी है वो कुछ कम होने लगता है. This is true not only for COVID but for other viral infections as well. However, this recovers once the infection gets treated and once the person recovers from the infection. डिलीवरी के आसपास अगर आपको कोविड होता है थोड़ा सा रिस्क बिकॉज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज द बल्क ऑफ द बेबी फुल टर्म द मदर इज क्वाइट हेवी एट दिस टाइम breathing difficulties and chest infections are slightly higher at this time. We take special precautions for delivery. A normal delivery is certainly possible if you have COVID-19. However, if you do need a C-section, that can also be done. Post-delivery, we ensure a good collaboration with the pediatric team and we try our best कि आप breastfeeding करा सकें. ये choice individually लिया जाता है हर mother को और बच्चे को देखते हुए. अगर बच्चा एकदम ठीक ठाक है, mother healthy है, otherwise mild COVID-19 infection है, उनको सांस लेने में तकलीफ नहीं है, ventilator etc. के यूज नहीं जरूरत पड़ रही है, mother breastfeed कराना चाहते हैं तो हम strongly encourage करते हैं कि वो breastfeed करें. Using a mask, washing your hands properly, holding the baby close to the breast, using a wide face shield as well along with the mask. We would encourage the mothers to breastfeed and keep roomed in with the baby. Breastfeeding के इतने फायदे हैं, not only if the mother has any infection but even otherwise. With COVID also we would want कि आप breastfeeding करा सकें and the hospital and the doctor looking after you will ensure कितना best हम इस चीज़ को कर सकते हैं. अगर डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं है हम कोशिश करेंगे कि मदर एक्सप्रेस करें मिल्क, एक डेडिकेटेड ब्रेस्ट पंप हो उनके लिए, एक डेडिकेटेड स्टाफ या फैमिली मेंबर्स लुकिंग आफ्टर हर ओनली हैंडल्स हर, ब्रेस्ट पंप करके वो दूध बच्चे को दिया जाए. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, करेंटली लिटरेचर डज नॉट टेल अस एनी लास्टिंग इम्पैक्ट or side effect on either the mother or the baby. But in case breastfeeding was not initiated, बच्चा अगर preterm पैदा हो रहा है because of COVID, so in reasons की वजह से because of the interruption with breastfeeding or because of the prematurity, yes, maybe there would be a lasting impact of these issues. COVID by itself per se, COVID का ऐसा कोई lasting impact अभी हम नहीं देख रहे हैं as doctors. There's a question from Jyoti Sharma. She says, are there any activities, medicines or foods someone should avoid during pregnancy? So Jyoti, with regards to activities, what we recommend is बहुत कम activities हैं जो हम आपको avoid करने कहते हैं in a healthy pregnancy. Combat sports, boxing, wrestling, हम मना करते हैं. अगर आप जिम जाते हैं पहले से तो कुछ चीज़ें हम कहते हैं, for example, instead of running on the treadmill, maybe you could take a walk or a run in a garden or outside. It is better because the ground is more stable. Certain activities, for example, whitewater rafting, rappelling, these are ones that we would recommend you do not do if you're pregnant. Deep sea diving, there are clear-cut guidelines which strongly recommend that if you suspect you're pregnant, please inform the diver in advance and you will not be allowed to dive. So these are particular activities जो मना है. Sometimes people ask me this question about simple activities. एक मंजिल सीढ़ी, हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे है, so क्या हम एक मंजिल सीढ़ी चढ़ सकते हैं प्रेगनेंसी में? So pregnancy normally एक healthy state है, ये एक बीमारी नहीं है. So very important to understand कि क्योंकि आप pregnant है तो एकदम खाट पकड़ने की जरूरत नहीं है, bed rest की जरूरत नहीं है. In fact, bed rest can be quite harmful in pregnancy. Yes, if there are certain special times in pregnancy, for example, if you have a history of bleeding in pregnancy, or if we are suspecting preterm labor, or there are certain other conditions, for example, pregnancy-induced hypertension, which is severe, certain other conditions, जिनमें कि हम आपको bed rest कुछ समय के लिए advise करेंगे. So your doctor who's looking after you is the best person. Between your doctor and yourself, you can decide what is a good level of activity for you. A big determinant is also how much activity were you used to prior to pregnancy. अगर आप प्रेगनेंसी के पहले एक्टिव थे तो बहुत अच्छा चांस है कि आप प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी काफ़ी एक्टिव रह पाएंगे. मेडिसिन जो अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी में, सभी मेडिसिन बिना अपने डॉक्टर से पूछे अवॉइड करनी. ओनली जो मेडिसिन आपके डॉक्टर रेकमेंड करते हैं या आपके डॉक्टर अलाउ करते हैं वो आपने प्रेगनेंसी में लेना है. Over the counter medications we strongly recommend do not take a medicine without consulting your doctor beforehand. वैसे तो हमेशा ही, but certainly in pregnancy. Any foods that you should avoid. So a few things that we recommend avoiding in pregnancy. कच्चा पपीता और raw papaya, pineapple, जामुन हम मना करते हैं, कटहल और जैक फ्रूट थोड़ा मना करते हैं प्रेगनेंसी में. कोल्ड ड्रिंक्स, सारे फिजी ड्रिंक्स आपके जो हैं, सोडा वाले जो भी ड्रिंक्स हैं वो मना करते हैं. स्मोकिंग एल्कोहल इज नॉट अ फूड बट आई विल एड इट हियर, प्लीज अवॉइड. चाय कॉफ़ी का इंटेक आप जितना कम रखें उतना अच्छा है.
ऑयली फूड्स, बहुत स्पाइसी फूड्स, स्टेल फूड, 1-2 दिन का पुराना सब्जी बिल्कुल अवॉइड कीजिए प्रेगनेंसी में। फ्रेश घर का बना अच्छा खाना खाइए प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम नहीं है जब आप कुछ भी अपने अंदर डाल सकते हैं। प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जब आपको सबसे अच्छा खाना अपने अंदर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि जो आप ले रहे हैं वो आपके ब्लड के थ्रू बच्चे को भी नरिश कर रहा है। आपका बॉडी इस टाइम पे बच्चे का पहला घर है, सो उसको जितना साफ सुथरा, जितना अच्छा, जितना सात्विक, जितना डिवाइन रखें उतना अच्छा है। रिगार्डिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, अगर आप नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, आप चाहते हैं प्रेगनेंसी में लेना, मना नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। However, non-vegetarian food should be hygienically sourced and it should be properly cooked. Uncooked या undercooked meat or chicken or poultry should be avoided in pregnancy. Besides this, I think with a sensible eating pattern, largely you can have the other foods. Processed foods, बाहर का खाना हम थोड़ा मना करते हैं प्रेगनेंसी में, घर पे बना के खाना खाएं। We have a question by Dr. Akanksha Patania. She says, can a mother get C-section or deliver normally when she is COVID positive? Yes, Dr. Akanksha, I just answered this question a while ago. COVID positive में अगर आप full term है या even labor शुरू हो गया है, so हम आपको deliver ज़रूर करेंगे। डिलीवरी के लार्जली 2 तरीके हैं, नॉर्मल डिलीवरी एंड सिजेरियन सेक्शन। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, माइल्ड इन्फेक्शन है, मदर लेबर टॉलरेट कर पा रही है, सर्टनली नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है कोविड के साथ। इन केस सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है फॉर सर्टन ऑब्स्टेट्रिक रीजंस, फॉर एग्जांपल बच्चे का धड़कन खराब हो रहा है, लेबर में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, फीटल डिस्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, धड़कन बच्चे का ठीक नहीं होना, या मदर लेबर का स्ट्रेन टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है मदर को, मदर का ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है। In those cases, yes, C-section may be needed for either the mother or the baby's safety. COVID positive, COVID, just like any other viral infection, does add a lot of strain. So it becomes more difficult for the woman to take labor with COVID. Just as I've had patients who had dengue with COVID. So अगर आपको डेंगू इन्फेक्शन है और साथ में आपका डिलीवरी हो रहा है, तो वो और मुश्किल कर देता है। डेंगू से लड़ना एक चीज़ है, डिलीवरी करने में भी काफ़ी ताकत लगती है। दोनों एक साथ आ जाएं तो मुश्किल हो जाता है, बोथ डॉक्टर एंड पेशेंट के लिए। But I think I've been very fortunate. I've had patients who've really trusted and gone ahead, and we've had normal deliveries with dengue, with typhoid, with COVID. So कोई भी इन्फेक्शन डिलीवरी के आसपास होना अच्छा नहीं है। कोई भी इन्फेक्शन रिस्क बहुत बढ़ाता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। पर डिपेंडिंग ऑन बाकी चीज़ें किस तरह से हैं, वी हैंडल दिस, एंड नॉर्मल एंड सिजेरियन दोनों ही रास्ते खुले रहते हैं इसमें। Okay, there is another question that I see. What are the safety measures for the mother and baby during COVID? Okay, so again, I have largely covered the various safety measures. सारे ही measures जो कि मीडिया में काफ़ी टाइम से प्रमोट किए जा रहे हैं, मास्क यूज़ कीजिए, घर पे रहिए, लोगों से नहीं मिलिए, वर्चुअल ऑनलाइन वीडियो मीटिंग्स एक्सेट्रा कीजिए, एंड व्हाट एल्स, सैनिटाइजर्स यूज़ कीजिए, हाथ साबुन से धोइए, साफ सुथरा रखिए अपने आप को भी, अपने आसपास भी, पर्यावरण को भी। ऑल ऑफ दीज आर सेफ्टी मेजर्स फॉर बोथ द मम एंड द बेबी। इस टाइम पे फैमिली से बॉन्डिंग का अच्छा समय है, वो यूज़ कीजिए। खाना बहुत अच्छे से खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं खाइए। अच्छे से खाने का मतलब है कि वैरायटी खाने में रखिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, हर कुछ कुछ देर में खाइए, घर पे खाना बना के खाइए, बच्चों को कुकिंग में इन्वॉल्व कीजिए, ये बहुत अच्छा समय है। आप भी घर पे हैं और बच्चे भी घर पे हैं। कुकिंग का एक लव होना आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल टू हैव। चाहे बेटा हो या बेटी हो, कुकिंग सभी को आना चाहिए है। आप अपने लिए खाना बना सकें और आप अपने लव्ड वंस को खाना बना के खिला सकें, ये बहुत अच्छा फीलिंग है। सो डू दैट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, it is also about safety from lifestyle diseases. India unfortunately एक hot center बनता जा रहा है for diabetes. बहुत ज़्यादा डायबिटिक्स, इनफैक्ट शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स अभी इंडियंस हैं। हम लोग जेनेटिकली थोड़े से प्रोन हैं टू गेट डायबिटीज़। सो अपना वज़न पे एक नज़र रखें, मेक श्योर आप दुबले हैं, आप बहुत मोटे ना हो जाएं इस टाइम पे। एक्टिविटी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गया है, हम उतना आना जाना नहीं कर पा रहे हैं, पर घर के ही अंदर घर के काम करने में काफ़ी अच्छा एक्टिविटी हो जाता है। Sports like skipping, jumping, going up and down the stairs, housework like झाड़ू पोछा,
घर की सफाइयाँ करना, इन सब में काफ़ी अच्छा मेहनत हो जाता है। एंड अपने आप को खूब एक्टिव रखिए। मोटे होना इस टाइम पे काफ़ी हानिकारक हो रहेगा। In fact, there have been a lot of patients that I have been seeing who have used this lockdown period to really get slim and fit and to really shed off the extra weight because वो अपने आप पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाए इस टाइम में। डिसिप्लिन एक चीज़ है जो जितना हो सके आप इंश्योर कीजिए कि आप इन्फोर्स करें। शुरू में इन्फोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद एक आदत बन जाएगी और वो अंदर से ईजिली होने लग जाएगा। समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे खाना खाना, साफ सुथरा अच्छा घर पे बना के खाना खाना, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। इसके अलावा सेफ्टी मेजर्स में आई वुड रिकमेंड make sure that you realize very important for mental health, for emotional health, be enclose। हम फिजिकली अपने फैमिली से या दूर रिश्तेदारों से दूर हैं, बट मेक श्योर आप इमोशनली उनसे डिस्कनेक्ट ना हो। उनके उनके पास में रहें थ्रू वीडियो कॉल्स एंड उनसे इन टच रहें। यदि कोई परिवार में ऐसा है जिनको बहुत मुश्किल हो रहा है कोप करना इस टाइम पे, सो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर सीख करें। ऑनलाइन कंसल्ट ले सकते हैं आप, डॉक्टर से ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर से ले सकते हैं। काफ़ी कोचेज़ हैं आजकल अवेलेबल, सो सी इफ़ यू नो ऑफ अ गुड कोच, उनसे बात करें। हमें मिलकर इस टाइम के थ्रू गुजरना है, सो अपने आप को अकेला नहीं महसूस करें इवन दो आप सोशली डिस्टेंस्ड हैं या फिजिकली डिस्टेंस्ड हैं। And do remember that this is a short time while March से already December हो गया है, so it's been the large portion of this year। पर अगर आप अपने लाइफ में देखें तो 80-90 साल की जिंदगी में 1 साल 1.5 साल बहुत छोटा समय रहेगा। ये समय हमें बहुत कुछ अच्छा सिखा के जाएगा और बहुत कुछ अच्छा ऑलरेडी सिखा रहा है। And there are things that will be outside our control. So the more we realize and the more we adjust and adapt, and as human beings, that is our number one superpower. We are the most adaptable species. So let's exercise those adaptability muscles and let's you know, get through this time physically apart, yet together in spirit. We have the next question from Himanshi Chabra, a very relevant question. She says, Doc, how far one can avoid babies' vaccination in pandemic to avoid risk, or it shouldn't be avoided? So Himanshi, बच्चों में vaccination, as a doctor, I'm a gynecologist, but the pediatric colleagues of mine look after the baby's vaccination. Two things that I understand that are very important is COVID-19 is not the only bimari which is happening right now. Yes, we are in the middle of a pandemic, but बाकी बीमारियां भी सभी चल रही हैं, from diphtheria, pertussis, काली खांसी, TB, पोलियो, और इन सब का वैक्सीनेशन भी जरूरी है कि ये ना हो कि हम कोविड से तो लड़ते हुए जीत जाएं, पर बच्चों में स्पेशली 0 to 5 years के बच्चों में रेगुलर लेवल्स पे वैक्सीनेशन होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे, ऐसी उनमें कोई बीमारी हो जाए जो कि उनके हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। So vaccination in babies is and in children is certainly very, very important. A wonderful initiative, and literally, thinking about all of this is why the administration here in Cloud9 Hospital, wonderful initiative that we've started is home vaccination for your baby. So, and I think this is running in all of the Cloud9 branches all over India. While I sit in Cloud9 Sector 14, Gurgaon, we have now developed a mobile unit where a trained staff nurse who administers vaccines. You can book your baby's vaccination online. We have this, it's our baby app, आप उस पे book कर सकते हैं. And there will be a home visit by a trained staff who will be wearing the PPE and will be protected. So आपकी सेफ्टी के लिए भी और उनकी सेफ्टी के लिए भी, and will come home and give your baby the required vaccination shots. For the consultation with the pediatrician, आप online video consult ले सकते हैं ताकि आपके बच्चे का वैक्सीनेशन डिले नहीं हो, अवॉइड नहीं हो, और कोविड के अलावा बाकी डिजीजेस से भी आपका बच्चा बचा रहे. So I would strongly encourage everyone who's listening to me to make use of this initiative. Get your baby vaccinated at home if possible. एंड इफ यू नीड टू, अगर आपको बच्चा बीमार लग रहा है या कोई परेशानी लग रही है, आपने ऑनलाइन वीडियो कंसल्ट लिया है, या आप समझते हैं कि बच्चा डॉक्टर को इस बच्चे को देखने की जरूरत है, या आराम नहीं आ रहा है बच्चे को इवन आफ्टर टेकिंग द एडवाइस एंड फॉलोइंग द एडवाइस ऑन अ वीडियो कंसल्ट, then I would strongly recommend that please come to the hospital. Do not hesitate to come to the hospital. Um, we at Cloud9, as are several other hospitals as well, particularly we at Cloud9, we are a mother and child hospital. So हमारा पूरा फोकस सिर्फ मॉम्स टू बी एंड बच्चों पे है. So थोड़ा सा ये हो जाता है that specialty hospital we are able to maintain more safety,
हाइजीन स्टैंडर्ड्स आर एक्सीलेंट. देयर इज नो क्रॉस, सो ऐसा नहीं है कि हर तरह के मरीज हॉस्पिटल में हैं. डिलीवरी ममीज एंड बच्चे, यही दो कैटेगरीज में पेशेंट्स रहते हैं. So see if you can come to a specialty mother and child hospital, or if you can get your baby vaccinated at home. My encouragement would be कि वैक्सीन को अवॉइड ना करें. वैक्सीनेशन बच्चों का बहुत ज़रूरी पार्ट है उनको एक अच्छा हेल्थ और एक अच्छा स्टार्ट देने के लिए टू लाइफ. So we have, okay, I do not see any other questions here. I think these are the only questions. I'll wait for a couple of more minutes till we get some more questions. Otherwise, if there's anything else that you would want me to talk about, I'll be happy to talk about it. Okay, so there is a question, I believe, here. Yeah, the question is from Vani Pavas Saxena. She says, Doctor, I'm in 36th week of pregnancy and C-section is planned for next week due to scar thickness. I'm feeling heaviness in pelvic bone from the last 2 days. So yes, Vani, you're in your 36th week, like you say, 36 weeks में आपका बच्चा का वजन अच्छा हो जाता है. Your baby would be somewhere between maybe 2.5 to 3.5 kilos, which is a good weight, which is a normal weight. So समझ लीजिए आसपास 3.5 किलो का तो बच्चा है. और उसके अलावा there is water, the liquor, the amniotic fluid around the baby. उसके अलावा एक अवलनाल है जो कनेक्शन है आपके और बेबी के बीच में, वो भी आधा किलो के करीब उसका भी वेट हो जाता है. पानी का वजन करीब करीब आधा 1 किलो मिला लीजिए. इसके अलावा योर बॉडी हैज गेन्ड अ बिट ऑफ फैट, देयर इज वाटर रिटेंशन. Overall, you must have gained several kilos from pre-pregnancy to right now. So heaviness is something that is expected. And इस टाइम पे usually the बच्चा takes the position. I do not know, I need to examine you to tell you कि आपका बच्चा किस पोजीशन में है. पर 36 वीक्स पे ज्यादातर बच्चे जो है वो पोजीशन ले लेते हैं. हम कहते हैं जिसको कि बच्चा सीधा पोजीशन ले लिया है. सीधा पोजीशन का मतलब ये नहीं है जैसे हम खड़े हैं. हम जब खड़े होते हैं तो सीधा मतलब सिर ऊपर है, पैर नीचे है. बच्चे के लिए सीधा मतलब बच्चे का सिर नीचे है और पैर ऊपर है. सो मदर के टमी के अंदर, अगर ये मदर का टमी है, बच्चे का सिर नीचे के साइड होता है, पैर ऊपर होते हैं ताकि बच्चा निकल सके बाहर बर्थ कैनाल से. सो बच्चे का हेड इस टाइम पे पेल्विक बोन में और नीचे लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर दे रहा होता है. एंड यस, काफी कॉमनली हेवीनेस वगैरह फील होता है. पेल्विक बोन जैसे आपने बताया, पेल्विक बोन के अलावा ग्रॉइन्स में भी कई बार हेवीनेस क्रैम्प से भी लगते हैं. वेजाइनल स्पाज्म्स भी आपको बीच बीच में आ सकते हैं. ये सब एक नॉर्मल पार्ट है फुल टर्म प्रेगनेंसी का. डिलीवरी कभी कभी प्री टर्म लेबर हो सकता है इन द 36 वीक कि आपको एक्चुअली क्रैम्प्स जो हैं, वो जो पेन्स आ रहे हैं, वो पेन आता है फिर चला जाता है, थोड़ी देर बाद फिर पेन आता है फिर चला जाता है, थोड़ी देर बाद फिर पेन आता है चला जाता है. लोअर बैक, एब्डोमेन, फॉरवर्ड, थाइज, ये सब में कहीं पे भी इस तरह का ये पेन हो सकता है. सो अगर आपका पेन वैसा ही है जैसा कुछ दिनों से चल रहा है, रेस्ट करने पे आराम आ रहा है, हॉट वाटर पैक लेने पे आराम आ रहा है, मसाज करने पे आराम आ रहा है, सो कैरी ऑन, मीट योर डॉक्टर वेन एवर इट इज स्केड्यूल्ड. अगर ये पेन अनयूजुअल हो जाए कि जैसा कल परसों से था उससे कुछ बदल जाए, पहले तो हेवीनेस लग रहा था पर अब जकड़ जकड़ के पेन आ रहा है, या पेन के साथ आप नोटिस करते हैं कि विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, मैं इस टाइम पे पर्टिकुलरली अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ, वेयर अ लाइट कलर अंडरवेयर. सो लाइट कलर अंडरवेयर सो दैट यू कैन सी द कलर ऑफ द विजाइनल डिस्चार्ज. नॉर्मली क्रीमी वाइट कलर इसका डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का हो सकता है, बट अगर आप नोटिस करें ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है पेन के साथ, स्पॉटिंग हो रहा है, लाल लाल रंग का दाग लग रहा है, जेली लाइक रेडिश मरूनिश मैला मैला सा जा रहा है, या आप नोटिस करें कि पानी छूट गया है, गीले हो गए हैं कपड़े और खूब सारा वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, यूरिन की तरह पानी लीक होता जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में अर्जेंटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और मिलें जाके उनसे, इमरजेंसी रूम पहुंचे हॉस्पिटल के. सो कोशिश हम ये करते हैं और उम्मीद है कि 37 वीक्स के बाद, विच इज़ फुल टर्म पूरा होने के बाद, हम बेबी को बाहर लाएं. बट प्रीवियस सिजेरियन अगर आपका हुआ है, आपने स्कार थिकनेस मेंशन किया, सो दैट मीन्स यू हैव हैड एटलीस्ट वन डिलीवरी प्रायर विद बाय अ सी सेक्शन. सो ऐसे में very important to be vigilant at full term for everyone, but particularly if you've had a previous cesarean. Any change in the quality of pain, change in the frequency of pain, associated vaginal discharge,
बच्चे के मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। मूवमेंट्स अगर बच्चे के ठीक चल रहे हैं, इट्स अ रीअश्योरिंग साइन। अगर आप देखते हैं मूवमेंट्स गड़बड़ हो रहे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कनेक्ट करें, हॉस्पिटल इमरजेंसी पहुंचे। So early pregnancy, our visits are quite delayed. You know, we see you 3-4 weekly. Then after about the 7th month, we start seeing you 2 weekly. And towards delivery, the routine visits also become weekly because we need to keep a closer watch. It is this time that your communication and that you connect with your doctor. And when I say doctor, it's not just the one doctor treating you, but her team, her entire team. So that connect has to be really close and strong. So she would have to explain to you the emergency protocols. For example, for my patient, the emergency protocol is anytime, day or night, 24/7. We have an emergency room in Cloud9 Hospital, Sector 14. Please come, please reach the emergency room. We have a doctor on duty, we have staff, we have admin staff. Everybody is ready to receive any emergency any time of the day. And once you come in, they get in touch with your senior consultant. So if it's my patient, they'll get in touch with me. And then whatever intervention is needed, and if need be, even I will be there in the hospital in the middle of the night. So a very important time. I wish you a very safe and a very joyous delivery, Vani. Hope you have a wonderful arrival of your little one. Okay, there's another question by Arshalan Khan who says, which procedure of C-section suturing method should be used for minimum scar formation in the body? Shalin Khan, I would like to, again, this is something. Uh, so there are a few things which contribute to healing and scar formation in the body, and I'll just give you what are the various categories. So number one is the suture material which is used or not used. These days we can even avoid that. So suture material क्या यूज कर रहे हैं. सेकेंड इज टेक्निक किससे सूचर कर रहे हैं. अलग अलग तरह के सूचर्स रहते हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी में अलग अलग तरह के स्टिचेस रहते हैं, उसी तरह से एज सर्जन हमारे पास बहुत सारे हमें टेक्निक सिखाए जाते हैं सूचर करने के लिए. सो किस टेक्निक से सूचर किया गया है, दैट इज अनदर थिंग. इसके अलावा आपका पोस्ट ऑप रिकवरी कैसा रहा, पोस्ट ऑप पीरियड सून आफ्टर द सर्जरी. क्या आपको इन्फेक्शन हुआ, या क्या आप बहुत समय तक बेड पे लेटे रहे, क्या आपने खाना पीना अच्छा खाया कि नहीं, जनरली आपका बॉडी का वाइटैलिटी, आपका बॉडी का रिकवरी कैसा है. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपकी स्किन का हीलिंग का पैटर्न कैसा है. आपने जब कान छिदवाए या कहीं पे बॉडी में स्कार हुआ है, उस पर हीलिंग कैसा हुआ है, कभी पहले कोई सर्जरी हुआ है उसका हीलिंग कैसा हुआ है. इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है अल्टीमेटली कि किस तरह का स्कार बनेगा. So talking about suture material is again purely should be the surgeon's prerogative. There are some situations in which a surgeon prefers to use one suture material over the other. ये बहुत technical aspect है, and I would encourage you to discuss and trust your doctor with it. Suture method, again, there are some situations जहाँ पे, for example, if the patient is on anticoagulants, if we notice there are bleeders, if the patient is a very fat patient, fat अगर बहुत ज़्यादा है, ऐसे में हम recommend करते हैं fat को अलग से suture किया जाए in layers. हम layered suturing method हम recommend करते हैं इसमें. हम रेकमेंड करते हैं मैट्रेस सूचर, एक पर्टिकुलर टाइप का सूचर रहता है, वो दिया जाए. कभी कभी हमें सपोर्टिंग सूचर्स देने पड़ते हैं यदि पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है, तो उनमें चांस होता है खुलने का, उनमें चांस होता है हर्निया बनने का, उनमें चांस होता है इन्फेक्शन होने का. सो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपके डॉक्टर सबसे अच्छा सूचरिंग मेथड आपके लिए चूज करेंगे. जस्ट एज कई रेसिपीज हैं पुलाव बनाने की, बट डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट ऑफ द फैमिली दैट वी आर सर्विंग, हम उस हिसाब से कुछ चीज़ें अपना एक यूनिक फ्लेवर हर शेफ डालता है, एक यूनिक अंदाज जैसे हर म्यूजिशियन का होता है, इसी तरह से हर सर्जन का एक कुछ यूनिक वो रहता है, और काफ़ी हद तक पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है. सो अ वेल ट्रेन्ड सर्जन विल यूटिलाइज द मेथड विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू योर दिस थिंग. आपकी तरफ से आप कुछ कर सकते हैं सो दैट आपका स्कार फॉर्मेशन मिनिमम हो. वो आप क्या कर सकते हैं, नंबर वन, मेक श्योर दैट यू मोबिलाइज वेल. सो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि जब भी आपका डिलीवरी हो उसके बाद कब आप चल फिर सकते हैं. कुछ समय का हम रेस्ट रेकमेंड करते हैं, उसके बाद चलना फिरना शुरू कराते हैं. जितना अच्छे से आप पैर चलाएंगे, हाथ चलाएंगे, बॉडी को मूव करेंगे, चलना फिरना शुरू करेंगे, उतना अच्छा आपका रिकवरी और हीलिंग होगा. साफ सफाई आप जितनी रखेंगे उतना अच्छा हीलिंग होगा. इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए है. सी सेक्शन के बाद सबसे ज़रूरी एडवाइस विच वी टेल एवरी सिंगल पर्सन, वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी, बट सी सेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी, खूब सारा पानी पीजिए. ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. अपने बॉडी को बहुत अच्छा हाइड्रेटेड रखिए.
सी सेक्शन के बाद ज़्यादातर चांस है आप बेबी को फीड करा रहे होंगे एंड आई विल स्ट्रांगली एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग। सो अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तो भी बहुत प्यास लगती है, लगता है गला एकदम सूख गया, बॉडी से पानी बड़ा निचुड़ गया, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खूब सारा पानी पिए। Always keep your bottle of water ready with you. Always keep sipping water. 4 to 5 liters of water लीजिए। आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको सूचर लाइन इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको बॉडी में एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, आपको ब्रेस्ट में इन्फेक्शन नहीं होगा, आपका रिकवरी और स्कारिंग और हीलिंग बहुत अच्छा रहेगा। बॉडी वाटर यूज करती है टू हील। सो जैसे ही हमने स्टिच लगा दिया, विद इन मिनट्स बॉडी जो है वो उसको जोड़ना शुरू कर देती है। तो स्टिच का काम केवल स्किन को पास में रखना है, जिस टाइम तक की हीलिंग नहीं हो। हीलिंग स्टिच नहीं कराता है, हीलिंग आपकी बॉडी अपने आप करती है। तो स्टिच का काम सिर्फ यही है कि ये जो 2 हिस्से जहां हमने कट लगाया है, जिसको ओपन किया है, जहां से हमने बेबी को बाहर निकाला है, स्टिच का काम है कुछ दिन तक उसको पास में रखा जाए ताकि हीलिंग अपने आप हो सके। और उसके बाद 2 तरह के स्टिचेस हैं, या तो रिमूवेबल वाले हैं जिनको कि हमें निकालना पड़ता है, ज्यादातर आजकल हम डिसॉल्वेबल वाले यूज करते हैं जिनको नहीं निकालने की जरूरत पड़ती, तो वो अंदर ही अंदर घुल जाते, बॉडी उनको खाने की तरह डाइजेस्ट कर जाती है। Okay, so Arshalan has just mentioned that he's heard of he or she. I'm sorry, I can't make out. Perhaps a she. She's heard of 2 methods of closure of wound in layman term. Gynae used to say that they will go for stick method or else they will go for mattress or interrupted suture. So जब हम कहते हैं स्टिक मेथड, इसमें 2-3 तरह हैं, इसमें भी फर्दर कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। सबक्यूटेनियस सूचरिंग होता है जिसमें धागा आपको नजर नहीं आता है और ऊपर से ऐसा लगता है जैसे स्किन को जो स्टिक कर दिया गया है। कुछ बड़े महंगे वाले ग्लूज भी आते हैं जिनको हम ऊपर से लगा सकते हैं, और बिल्कुल पेस्टिंग जैसा इफेक्ट आता है जिनके ऊपर कई बार ड्रेसिंग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। So discuss with your doctor, depending on what methods are available in the hospital that you are delivering at, and what your gynecologist is comfortable with. What are your skin characteristics, fat thickness, and previous history of surgeries, infections. अगर टेंडेंसी है आपकी बॉडी में कीलॉइड बनाने का या हाइपरट्रोफिक स्कार बनाने का, तो हम कुछ स्पेशल दवाइयाँ देते हैं जिनसे कि ये टेंडेंसी कम हो जाए। सो ऑल इन ऑल, जस्ट एज जब हम एक शेफ को एक डिश के लिए देते हैं और हमने कुछ अपने चॉइसेस बता दिए हैं, उसके बाद हम ट्रस्ट करते हैं कि वो शेफ सबसे अच्छा हमारे लिए डिश या वो प्रिपेयर करेंगे। Similarly, I would recommend trust your surgeon. As surgeons, for every single patient that we deliver, that we operate upon, we want to give you the absolute best outcome. And whatever is needed for that, we'll do that, depending on your individual characteristics. And I'm sure your surgeon would do the same. So, बहुत ज़्यादा technicalities की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. But yes, if you are curious and you would like to discuss this, certainly go ahead and talk to your doctor. I'm sure she will lay out the options for you and she will lay out the plan that she has going into the theater before doing your surgery. And all the best, Arshalan, in case you're going ahead with a surgery or a delivery, you or your family. All the best for that. I hope you have a wonderful outcome with a beautiful, nearly invisible scar. Okay. There is a question that says, can umbilical stem cell transplant be done during delivery if the mother has COVID or any other diseases? Well, there are certain infectious diseases जो कि अगर उस टाइम पे हैं जब डिलीवरी हो रहा है, cord blood banking cannot be done, or is most of the banks would refuse if the mother has COVID or any such active infection at that time to store the cord blood. However, there are 2-3 things that I would like to emphasize about stem cell banking. Stem cell banking, it's something that one of the ways going forward is a public banking, जिसमें कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही बच्चे के लिए या अपने फैमिली के लिए अपने ही बच्चे का स्टेम सेल यूज़ करें। हाँ, चांस बढ़ जाता है कि करेक्ट मैच आपको अपने फैमिली के अंदर मिल जाएगा, however, या सबसे अच्छा मैच मिल जाएगा। However, with public banks, there are millions of samples, and उन सैंपल से आपको अपना मैच जो है वो मिल सकता है। There are some procedures which are really, because COVID is such a recent disease, there are some procedures through which irradiation of stem cells, etc., can be done, but whether it is valid for COVID or not, I am not very sure. I will have to find this out. So I think if you are concerned about this, maybe the doctor, a hematologist, or the doctor who specializes in
umbilical cord blood transplants would be the right person to answer this question. I would certainly want to research more and maybe have a word with my hematology colleagues and get back with the absolute exact answer from the COVID point of view. But otherwise, we do test cord blood samples routinely for HIV, hepatitis B, hepatitis C, and screening is done for all infections. So that the blood which is saved in the blood bank should be uninfected, so that it can be used for whoever it needs to be used for in future. Okay, I think that is all. I hope you all enjoyed the session. I loved talking to all of you, even though it's a virtual this thing. And I hope you all joyous pregnancies and happy deliveries going forward. So, my best wishes and best wishes from my whole team at Cloud9. I think I will take your leave now. Thank you.